Please come in. So let's start. Uh, Yesterday, Azhan, listen to me. Yesterday we talked about. Yesterday we talked about a pen. The difference, in English sentences, we normally don't say just pen. Okay, pen is a singular countable noun. अगर हमें कलम ही बोलना है, सिर्फ कलम बोलना है, still we will say a pen. मेरे पास कलम नहीं है. I don't have a pen. हम लिखे कैसे? मेरे पास कलम नहीं है. I can't write. I can't write. I don't have a pen. तो ये इंपॉर्टेंट था. Then I also gave another example with egg. ध्यान रखना, खाने पीने की चीजों में मामला थोड़ा बदलता है. एग बोलने से दो तीन चीजों का ख्याल आएगा. पहले तो आप समझते हैं एग. लेकिन सपोज somebody has brought cake for you. Somebody has brought cake for you. आपके लिए कोई केक लेके आया है और आप पूछते अंडा है इसमें, तो आपको दिख रहा है गोल 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 अंडा रहेगा उसमें. आप समझ रहे हो ना? तो यहां जो आप पूछ रहे हो अंडा है इसमें, वो अनकाउंटेबल नाउन पूछ रहे हो. अंडा द मटेरियल. अंडा द हाँ, अंडा है इसमें मतलब गोल सा अंडा घुसाया हुआ बीच में, ऐसा पूछ रहे हो आप? नहीं. अंडा द मटेरियल वो है इसमें. तो आप इस सीधे पूछ सकते हैं डज इट हैव एग. डज इट हैव. यहाँ एन एग बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप गोल वाला पूछ रहे हैं, इसमें घुसा हुआ, आप कहीं पर छुपा हुआ ऐसा पूछ रहे हैं. तो आप क्या पूछेंगे? डज इट हैव एग. आप बोल सकते हैं आई डोंट ईट एग. आई डोंट ईट एग. तो खाने पीने की चीजों के मामले में ये मामला थोड़ा अलग है. पपाया, पपीता. एक पूरा जो होता है पपीता, बड़ा सा शेप, फिक्स शेप होता है उसका. राइट. ए पपाया. रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड. यस. ए पपाया. आपको प्लेट में काटकर मम्मी ने ऐसे पपीता दिया, मैंने पूछा क्या खा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई एम ईटिंग ए पपाया, और आई एम ईटिंग पपाया, और आई एम ईटिंग पपाया. आप यहां बोलेंगे आई एम ईटिंग पपाया, बिकॉज अब आप मटेरियल की बात कर रहे हैं. प्लीज कमेंट. अब आप नहीं बोलना चाहेंगे आई एम ईटिंग ए पपाया, क्योंकि आप ए पपाया नहीं खा रहे हैं. ए पपाया मीन्स द होल पपाया. राइट. ए पपाया. वो पपाया पपीता को हम बोलते हैं ए पपाया. मैं हाथ में ऐसे पूरा पपीता लेके बैठा हूं, ठीक है, और मूव अ लिटिल बिट. ऐसे हाथ में लिए हुए पपीता, और मैं पूछूं क्या है, व्हाट इज दिस, अब क्या बोलेंगे? दिस इज दिस इज अ पपाया. दिस इज अ पपाया, क्योंकि मेरे हाथ में एक समूचा पपाया है. आप बोलेंगे दिस इज ए पपाया. मैं हाथ में कुछ पपीता काट के, पपाया काट के ऐसे लेके बैठा हूं, पूछू व्हाट इज दिस, क्या बोलेंगे? दिस इज पपाया. ठीक है. और ऐसे कोने में तीन चार बड़े बड़े ऐसे या छोटे छोटे कंप्लीट फुल ऐसे रखे हुए, मैंने पूछा व्हाट्स दैट इन द कॉर्नर? पपायाज. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो पॉइंट वही है दैट यू डू अंडरस्टैंड. खाने पीने की चीज के मामले में ए के बगैर भी यूज करना पॉसिबल है, लेकिन चेयर को खाली चेयर बोलना ए के बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा सेंटेंस में. कहां बैठे हैं? कुर्सी नहीं है. वेयर डू आई सिट? देयर इजंट अ चेयर. देयर इजंट अ. यस. आप प्लूरल बोल सकते हैं देयर आंट एनी चेयर्स, वो अलग बात है, लेकिन चेयर खाली नहीं बोल सकते. जो बचपन से रटा है चेयर मतलब कुर्सी, वो अब आप चेंज करिए. कुर्सी का इंग्लिश अ चेयर. दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक. वो सेंटेंस में पॉसिबल नहीं है बगैर ए के बोल पाना. चलिए कुछ और बोल देते हैं जल्दी से, ताकि कल वाली बात क्लियर हो जाए. हाँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस जितने लोगों ने की. रुद्र बेटा, आपको बहुत मेहनत करना है, आपकी गलतियां बड़ी बड़ी हैं थोड़ी.
but you need to work hard. Okay. The rest of you guys have done a good job. A few mistakes here and there you guys have made. I went through your sentences, your practice. और जो लोग कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आई कैन सजेस्ट आप पढ़िए दूसरों के लिखे हुए सेंटेंसेस. अगर आपसे खुद अभी सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते, आपके दिमाग में इतनी क्षमता नहीं है कि वो सेंटेंस आप खुद से बना सकें, then please read other people's sentences. And if you can make, then don't be lazy. Lazy people are never very good at learning things. ठीक है, आप ऐसे सीख नहीं सकते लेजी होके. तो आपको सीखना है तो मेहनत तो करना होगा. तो good practice. Now let's talk about some of the mistakes you guys have made. Before I look at your sentence, I just wanted to give a few examples. मुझे सैंडल खरीदना है. अगर एक लड़की बोलना चाह रही है, कैसे बोलेगी? आई वॉन्ट टू बाय. हाँ बोलो. A sandal. पेयर ऑफ मत बोलना. आई वॉन्ट टू बाय सैंडल्स पहले सीधी. ए पेयर तभी बोलना होता है जब आपको एक बताना होता है, उसकी क्वांटिटी बतानी होती है. उसकी क्वांटिटी नहीं बतानी है तो आप क्यों बोलेंगे? आपको सैंडल खरीदना, आप यहाँ कहाँ बता रहे हैं कि कितने खरीदने हैं? आपको सैंडल खरीदना ये बोलना चाह रहे हैं. तो आई वॉन्ट टू बाय सैंडल्स. ठीक है. एनी प्रॉब्लम्स? बताने के लिए कि कितना खरीदना है आपको ए पेयर ऑफ बोलना है. ये सब चीजें ग्रामर क्लास में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पढ़ाई जाती है. सेंस के लिए नहीं, सिर्फ करेक्शन के लिए कि ए पेयर ऑफ सैंडल्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? जब बताना होता है एक, क्योंकि वो प्लूरल है, तो एक ए तो बोल नहीं सकते, इसीलिए बोलना पड़ता है. मान लो आप टी शर्ट खरीदना चाहते हो, आप दुकान में जाते हैं और आप बोलते हैं टी शर्ट चाहिए. ठीक है. I would like some t-shirts. I would like some. Show me some t-shirts. ठीक है. एक तरीका ये है. अगर आपको एक टी शर्ट लेना है तो आप बोलेंगे I want to buy a t-shirt. I want to buy a t-shirt. अच्छा ठीक है, ध्यान रखिएगा कि one t-shirt और a t-shirt, ठीक है, there is a difference. a t-shirt मतलब खाली टी शर्ट. ध्यान रखने वाली बात है. एक ही खरीदना है तो वन टी शर्ट की बात होती है. ठीक है. अगर आप दुकानदार को बोलना चाह रहे हैं कि हम दो नहीं लेंगे, एक लेंगे, तो आप बोलेंगे आई विल बाय वन टी शर्ट, नॉट टू. वहां ए नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका ध्यान किस बात पे है? एक लेना है, दो नहीं. तो आई वॉन्ट टू बाय वन टी शर्ट, नॉट टू. And when the two little girls come, then what am I going to do? Take that chair, please. We have just one bench at the back, or two? Two benches. Okay. Looks like everybody has turned up, but not, Mahapara is absent again after being present one day yesterday, after a break. I don't know why she's so irregular. Yes, Omar, good afternoon. So, okay. All right. Yeah, let's make this chair available. Just pick it up from here. Yes. Yeah, pick it up from here. Yep. Great. Yeah, place it there. थोड़ा ध्यान दीजिएगा. ए चेयर बोल करके, ए टी शर्ट बोल के हम टी शर्ट बोलना चाह रहे, चेयर बोलना चाह रहे, एक नहीं बोलना चाह रहे. कल वाला मैसेज यही है ना. अगर एक पे एम्फेसिस करना है तो वन बोलना पड़ता है. जैसे एग्जांपल लीजिए. अरे यार, एक लाठी से क्या होगा? 4-5 लाठी लेके चलो. सपोज वी आर गोइंग टू फाइट. तो लेट्स नॉट गो विद जस्ट वन स्टिक. ओके, लेट्स टेक 4 और 5. तो ध्यान रखिए, मैंने कहा वन स्टिक इज नॉट इनफ. वन स्टिक इज, लेट्स टेक. अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस ने लाठी से क्या होगा? गन लेके चलो. ठीक है, पॉइंट समझिएगा. हाँ, मैंने लाठी से क्या होगा? गन लेके चलो. तो मैंने कहा लेट्स नॉट टेक ए स्टिक. लेट्स नॉट टेक अ स्टिक, लेट्स टेक अ गन. यहां ए बोलने का मतलब एक नहीं था. ए स्टिक मतलब स्टिक. बात समझ में आ रही है? ऑलराइट. तो पॉइंट ये था कि एक गन मतलब गन. एक गन मतलब गन. फोकस गन पे होता है जब एक गन बोलते हैं. मेरे पास बंदूक नहीं है,
आई डोंट हैव अ गन, आई डोंट हैव अ गन। बंदूक है तुम्हारे पास? डू यू हैव अ गन? ठीक है, मैंने एक दो तीन चार नहीं पूछा, बंदूक है तुम्हारे पास? डू यू हैव अ गन? यस। और आप चाहे तो प्लूरल से भी पूछ सकते थे, नो इश्यूज। कैसे पूछेंगे? डू हैव गन्स? पॉइंट मेरा ये था कि खाली गन नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो सिंगुलर काउंटेबल है। इट्स अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दैट्स व्हाई यू कांट से डू यू हैव गन, ये नहीं कर सकते, भूल जाइए इंग्लिश में। ठीक है, तो जब ऐसे कभी तभी हो पाएगा जब वो फिक्स एक्सप्रेशन का हिस्सा हो, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का हिस्सा हो। जैसे मैंने कल बताया, बाय बस, इन बेड, ऑलराइट, एट स्कूल, एट होम, ये सब क्या है? फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। ऑलराइट, तो आई होप आई हैव रिकंसोलिडेटेड दैट आइडिया। आपके दिमाग में वो आइडिया ज्यादा बेहतर हो गया कल के बाद। आज फिर सुन लिया आपने थोड़ा बहुत, तो चीजें थोड़ी बेहतर हुई। तो प्लीज राइट अ कपल ऑफ सेंटेंसेस टू शो that you understand what I'm teaching. And I would like to look at the sentences you guys have written in the group. Rudra beta, आपके sentences शुरू करते. There are quite a few mistakes. If you look at other people's sentences, you will realize where your mistakes are actually. You know, everybody has done a good job. You aren't clever. Your sister is much cleverer. तुम तेज नहीं हो, तुम्हारी बहन ज्यादा तेज है. Okay, good. Shah Rukh Khan is much smarter than Salman Khan. True, much smarter, not just smarter, much smarter. बहुत ज्यादा उससे तेज है, सही बात है. This is true. Shahrukh Khan is much smarter than Salman Khan. Actually, Shahrukh Khan is a more educated person than Salman Khan. You know. Yes, beta. Okay, okay. Yeah. Uh, you also wanted the same chair. No, she didn't want that chair. Why did you have to do this? She was ready to sacrifice it for you. Okay, let's see. Nice, nice dress. Beautiful. And I think warm too. Yeah, I think it's warm too. She's looking like a, what do I say? A doll or something? Okay, let's see. Your brother is handsome, but not as handsome as you. तो ये as handsome as में गौर करिए, बीच वाला वर्ड handsome है, right? Adjective. He ran as fast as he could. जितना तेज हो सकता था वो दौड़ा. He ran as fast as he could. ये fast adverb है, right? Adjective नहीं है. He ran as fast as he could. Now say, pay attention to what I'm saying. Full attention. He ran as fast as he could. वो दौड़ा, जितना तेज हो सकता था उतना दौड़ा. He ran as fast as he could. Good. So Shah Rukh Khan is a good actor, but not as good as Pankaj Tripathi. All right. Shah Rukh Khan is a good actor, but not as good as Pankaj Tripathi. Pankaj Tripathi के जितना अच्छा नहीं. Good adjective है ना compare करने के लिए. Not as good as Pankaj Tripathi. Good. Kolkata is smaller than Bihar. Okay, Kolkata is smaller than Bihar. That's not true. Kolkata is much bigger. Bihar is much smaller. I'm as clever as you. Okay. I know chowmin tastes good, but not as tasty as Maggie. Very good. Laptops are useful, but not as useful as phones. ने सीधा सिंगुलर फोन लिख दिया है, नहीं लिख सकते ना. फिर लिख दिया कैट आर फ्रेंडली. क्या लिखना था? Cats are friendly, but not as friendly as dogs. Okay. My friends are more interesting than you. ठीक है भाई, मैंने कब तुम्हारे दोस्तों से कंपटीशन किया? That I'm more interesting than your friends. ठीक है, it's okay. She looks very nervous. You've got a scooty. I have
ए और टू सिस्टर्स का एक्सप्लेनेशन देना रानी। व्हाट इज द करेक्शन? I have got two sisters. I have two sisters. They are both the same. I have two sisters. I've got two sisters. Both of them have the same meaning. My sister's got a daughter. Does she? Has she? Has she? Oh, nice. The sister who lives in Ranchi. Then another sister. Okay. The first sister. You have two sisters, I think. One lives in two. जब भी टू बात करें तो एक पहले के बारे में बोलेंगे one. One lives in Ranchi and the other lives in, then they're both cousins. Okay. One cousin lives in Ranchi and the other cousin lives in Badi Pahari. Okay. All right. In Bihar itself. Okay. My sister's got a daughter. So you should, instead of sister, write my cousin. In English, sister and cousin are slightly different words. And I know for an Indian mind, cousins are like brothers and sisters because हम लोग बोलते ही रहते हैं चचेरे भाई ममेरे भाई बोलते रहते हैं, चचेरी बहन ममेरी बहन वर्ड लगाते रहते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग अलग तरीके से सोचता है. बट इन इंग्लिश cousin is a cousin. All right, they are not our brothers and sisters, they are cousins. उसके साथ ब्रदर और सिस्टर लगाना इंडियन इंग्लिश है. अंग्रेज अमेरिकन कभी यूज नहीं करते कजन के बगल में ब्रदर और सिस्टर. इट्स ओनली इंडियन इंग्लिश. बोलचाल में इज फाइन, बट एग्जाम्स में कजन ब्रदर नहीं लिखते, अब मेल कजन लिखते हैं, तो क्या हो जाता है? मेल कजन मीन्स चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई. फीमेल कजन. Got it? Pakistan sucks. Okay. What would you like to eat? What would you like to eat? Have you got a car? You haven't got a computer. Next. Shubham's laptop is newer than Aman's laptop, and it is cheaper too. Good job. Your painting is good, but I think you can do better. Gaur karna, Rudra. It isn't very cold today. It was colder the day before yesterday. The day, Deepak, the day before yesterday. Chahal isn't very clever. His wife is much cleverer. And I think they are separating. I have heard the news that they are separating. They are breaking up their wedding, their marriage, I mean. Ashfi writes, my purse is newer than yours and it's more beautiful. मेरा पर्स तुम्हारे पर्स से नया भी है और ज्यादा सुंदर है. My purse is newer than yours and it's more beautiful. इसके बाद हुआ जमकर लड़ाई, है ना? My house is bigger than yours and it's more modern. Good. You are clever, but not as clever as your sister. तुम भी तेज हो लेकिन उतने नहीं जितनी तुम्हारी बहन. You are clever, but not as clever as your sister. Okay, your sister is cleverer. इससे क्या पता चला? Your sister is cleverer than you. There is one mistake, beta. Your mobile set is modern, but not as modern as mine. Not my. Mine. If you write only my, then you have to write my mobile, because only my is not used alone. Okay, you need to put my what? My mobile. Your mobile set is modern, but not as modern as my mobile. Okay, and if you don't want to repeat the word my mobile, you can write mine. Rudra, can you see that how they're using the adjective? Okay. Good job. This restaurant is too expensive. Can we go somewhere cheaper? Who is saying, the boyfriend or the girlfriend? The boyfriend will say this, then she will say, oh, you are so, what? Kanjar. You care about this. I think boys normally don't say this unless they're very close to each other. Otherwise they, वो प्रतिष्ठा में प्राण गवाते रहते बेचारे. They just,
in order to save their image, they keep losing money, they keep making a fool out of themselves. And those girls who are with you for your money, they will create such situations where you cannot say no. Otherwise, you have to lose your image. It's a very, very big trap, guys. You need to be smart to, save yourself from such traps. Of course. A lot of girls today. That's why I like small town girls, they're different. A lot of girls today have realized that they have a superpower, you know, and they can absolutely exploit boys with that superpower. A lot of girls, they have zero conscience here. All they care about is how they can exploit you financially, take advantage of your money. They will say nice things about you, and then they will get you in that trap where you have to pay for a lot of things they buy, their clothes, their purses, their movie tickets. Oh my goodness. Sometimes you have to finance the parties they will throw for their friends. I mean, it's like taking all the responsibility of a married life without getting married. Very, very futile relationship. Means nothing. Okay. She isn't very honest. Her sister is much more honest. Okay. Very good. Here you use the word is, her sister is, but look at the next sentence. Your English is good, but I think you can do better. That's fine as well. It isn't very cold today. It was colder yesterday, not coldest. Colder. Comparative. Colder. What is the comparative of cold? Colder, Tabriz. It was colder yesterday. कल ज्यादा ठंड था आज से, है ना? Comparison. This mobile phone is so cheap. I need an expensive one. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. मुझे महंगा चाहिए. इससे ज्यादा महंगा चाहिए नहीं बोल रहा है. बस महंगा चाहिए. अगर इससे ज्यादा महंगा चाहिए तो more expensive one. This mobile phone is so cheap. I need a more expensive one. इससे ज्यादा महंगा चाहिए. तो कंपैरिजन हो गया. और सीधा बोल दिया I need an expensive one. मुझे महंगा फोन चाहिए. ठीक है. Your advice is too bad. नहीं, अच्छा चलो छोड़ देते उस सेंटेंस को. I have a mobile phone. I need some apples. No apostrophe. No apostrophe. I need some apples. This is a book. There are some books in my bookcase. Good. Rudra writes, I am tall, but not as tall as you. These are good, but not as good as. ये क्या है? Then. ये समझाएं मुझे. रुद्र, क्या लिखा आपने? हिंदी में क्या कहना चाहते हैं? ये वाले ठीक हैं, लेकिन उतने नहीं जितने the earlier ones, the other ones, the other ones. हम लोग मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जितना पहले करते थे. ओके, चलिए ठीक है. We are having fun, but not as much. पहले तो as के बाद have नहीं आ सकता था ना. ये तो वर्ब है, ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा है. आपको पता है ना. We are having fun. हम लोग मस्ती कर रहे हैं, but not as much as earlier. Not as much as earlier. We are having fun, but not as much as earlier. तो एक पैटर्न को बार बार लिखने से बहुत फायदा नहीं है. समझ में आ गया? तो एक दो सेंटेंस काफी है, फिर मूव ऑन करिए, वैरायटी लाइए. ओके, एक ही पैटर्न को एक दो तीन मैक्सिमम. ओके, क्या कहना चाह रहे हैं? वी आर लिविंग अ बेटर लाइफ देन हिम. हम लोग उससे बेहतर जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये इसमें क्या हुआ पहले जैसे थोड़ा सा ये एम्बिग्यूअस सेंटेंस बोल रहे हो आप हिंदी में, इसलिए मुश्किल हो रही है. अगर आप खाली पहले जैसा नहीं, पहले जैसा नहीं, खाली फ्रेज लगाते जाएंगे तो पहले जैसा क्या नहीं है. हम लोग उससे बेहतर जीवन जी रहे हैं, लेकिन पहले जैसा अपने जितना पहले जैसा नहीं, कि पहले जितना गैप नहीं, क्या पहले जैसा नहीं. इट्स नॉट क्लियर, है ना. तो और बेहतर सेंटेंस बनाइए. कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अपनी लैंग्वेज पे अटक जाओगे हिंदी पे, ठीक है, तो वो आपको एहसास नहीं होगा कि आप क्यों समझ जाते हो उसको, लेकिन वो समझने लायक बात नहीं है. जरा सुनिएगा. हम
हम उससे बेहतर, तुमसे बेहतर जिंदगी जी रहे, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब बताओ इससे क्या समझ में आया तुम्हें? तुमसे बेहतर जिंदगी जी रहे ये तो समझ में आता है, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब किस, क्या पहले जैसा नहीं? पहले मेरी जिंदगी तुमसे ज्यादा बेहतर थी, अभी भी बेहतर है, लेकिन पहले तुमसे ज्यादा बेहतर थी, अभी से ज्यादा बेहतर पहले थी, या पहले मेरी जिंदगी अभी जितनी है उससे पहले? ये अननेसेसरी था, पहले जैसा नहीं है ना। ओके, तो थोड़ा रुद्र आप गौर कर सकते हैं कि कैसे आप गलत समझ गए चीजों को। यू आर मच मोर ब्यूटिफुल देन हर, बिलीव मी। ओके, टुडे यू आर लुकिंग मोर गॉर्जियस। आगे बोलिएगा। देन एज लुक एज यू, पहले एज लुक एज यू कैसे हो गया? एज के साथ हम लोग एडजेक्टिव लगा रहे थे ना, एडवर्ब लगा रहे थे ना कंपैरिजन करने के लिए। वर्ब कहां से आया? आप गौर कर रहे हैं, सारे सेंटेंस में एक ही गलती है। आप उस आइडिया को नहीं समझे थे। मैं तुम्हारे जितना लंबा नहीं हूं, कैसे बोलेंगे बेटा? आई एम नॉट एज टॉल एज यू। इजियर, आई एम नॉट एज टॉल एज यू, आई एम नॉट एज टॉल एज यू। डोंट बटर मी अप, डोंट बटर अप मी नहीं, डोंट बटर मी अप, डोंट बटर मी अप। कीप वर्किंग हार्ड एवरीबॉडी, जितनी गलतियां होती हैं उतने ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। सो कीप दैट एटीट्यूड। Okay, Afzal is doing some, advertisement in the group. BK Dairy Farm, Bihar Sharif. Okay, support his dairy farm, guys. Buy milk from there. He is one of your friends, one of your classmates. So, yeah. So today we are going to talk about have got. Have got is the same as have, meaning wise. Sentence pattern, words are slightly different. Negative questions are very different. So I will say sentences with have, you guys will change them into have got. I have one sister. अच्छा, मैंने यहाँ वन लगा के क्या हाईलाइट करना चाहा? एक है, दो नहीं है। और सुनो, आई हैव गॉट अ सिस्टर, इससे क्या पता चला? मेरी बहन है। कुछ लड़कों की बहन नहीं होती है, लेकिन मैंने कहा आई हैव गॉट अ सिस्टर, मेरी बहन है, आई हैव गॉट अ सिस्टर। और लेकिन सिस्टर है, सिंगुलर है, तो आप एक ही सोचोगे, लेकिन फोकस एक पे नहीं है। पॉइंट ये है मेरा, ये नहीं कि ऐसा बोलने से आप प्लूरल सिस्टर्स हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। आई सेड I've got a sister, I've got a sister, मतलब मेरी बहन है। ठीक है, एक ही है, क्योंकि मैंने सिस्टर बोला तो आप एक ही बहन सोचोगे, लेकिन आप फोकस मेरा ये बताने पे नहीं कि मेरी एक बहन है, मेरा फोकस ये बताने पे कि मेरी बहन है। और सुनो, I've got one sister, यहां पर मेरा फोकस बताना है कि एक है, ये नहीं कि बहन है, एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है, वन यूज किया मैंने। I've got one sister. Okay, I have a problem, I've got a problem, है ना? I have a problem को I've got a problem. Okay, good. और फिर से इसमें फोकस ये बताने पे कि समस्या है, इस ये बताने पे नहीं कि एक समस्या है। फोकस नंबर पे नहीं है, फोकस नाउन पे है। I've got a problem. Okay, तुमको दिक्कत है जी, डू यू हैव अ प्रॉब्लम? हैव यू गॉट अ, तुमको दिक्कत है, हम यहां बैठेंगे, तुमको दिक्कत है, आई विल सिट हियर, हैव यू गॉट अ प्रॉब्लम? ए क्यों बोल रहा है? प्रॉब्लम बोलने के लिए, क्योंकि आप बोल नहीं सकते हैव यू गॉट प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? हैव यू गॉट अ प्रॉब्लम, आई विल सिट हियर, हैव यू गॉट अ प्रॉब्लम? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम्स? ना, मूव ऑन। शी डजंट हैव ए डिग्री, शी हैजंट गॉट अ डिग्री। शी डजंट हैव अ डिग्री का दूसरा तरीका बोलने का,
She hasn't got a degree. Meaning is the same. Do you have a doll? Have you got a doll? Do you have a doll का दूसरा तरीका? Have you got a doll? जो लोग इन्वॉल्व नहीं है, इन्वॉल्व हो जाइए, इंगेज हो जाइए। मत सोचिए क्या आपके लिए नहीं है ये एक्सरसाइज, आपके एक एक के लिए, A to Z स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान चीज है। They have a big house. They've got a big house. They've got a, मैंने कहा they have a big house, आप क्या बोलेंगे? And the meaning is still the same. उनका घर बड़ा है, right? They've got a, उनका घर बड़ा है, they've got a big house. यहाँ पर ए पे फोकस मत कर दीजिए कि एक बड़ा घर है, ऐसा एक पे फोकस नहीं करना है। उनका घर बड़ा है, they've got a big house. They've got a big house. Okay, they have a big house. All right. Come to page number 72. A Parisian in London. Achha, before I ask you to do a Parisian in London, I'll give you guys 1 minute with a partner. Make sentences with have, has. Ask your partner to change it into have got and has got. ठीक है, ताकि आप एक दूसरे को मदद कर सके थोड़ा। चलिए, come on, start. For 1 or 2 minutes you'll practice this. एक सेंटेंस बोलिएगा, I have a dog. आपका पार्टनर क्या बताएगा उसको चेंज करके? I've got a dog. She has a dog. She's got a dog. She doesn't have a dog. She hasn't got a dog. ठीक है, कर सकते हैं? Just 1 minute. Go ahead. Practice with each other. You can practice with her. Those two. Rishabh, join them, join them. All right, everybody. Thank you. Okay. That was just a warm-up round because I'm going to teach you the same thing again, okay? Through another exercise. 9.6. A Parisian in London. Parisian means? A person from Paris is called a Parisian. Take a look at the word. P-A-R-I-S-I-N. Parisian. A Parisian in London. A Parisian in? It means a person from living in London. A Parisian in London. Okay.
Listen to Chantal. हाँ, चंटाल मत पढ़ना, फिर थोड़ी देर में चंडाल भी बोल दोगे. Chantal. Listen to Chantal, comma, a French woman. English ऐसे लिखा जाता है. इसका मतलब Chantal is a French woman. ठीक है. अब यहाँ ए लिखा है तो इसका मतलब वन मत समझिए कि वन फोकस एक पे है. फोकस इस बात पे कि वो फ्रेंच वुमन है, वो इंडियन वुमन नहीं है. ये है फोकस. लिसन टू Chantal, a French woman. Chantal is a French woman. Okay. Where does she live and work? Is she married? Look at the photo. Does she look like married? Does she look married to you? She looks very young now. Okay. Listen to her. Listen to her. Give me a second. I hope the audio. Come on, guys. Alexa, raise the volume to 10. Audio file 9.6. Everybody pay attention. Listen carefully. Tape script 9.6. A Parisian in London. Hello, Chantal. Hi. Now, you're French, but you live in London, is that right? Yes, that's right. And are you on your own here in London? No. I'm here with my husband, André. Ah, okay. Do you work in London? Yes, I do. I've got a good job. I work in a bank. And where do you live in London? Have you got a flat? Yes, we've got a nice flat in Camden. Oh, great. Has Andre got a job? Yes, he has. He's got a shop in Camden. He sells French cheese. Wow, that's good. And tell me, have you got a car here? No, I haven't got a car. I go everywhere on public transport. It's much easier. Okay, thank you very much. I hope you enjoy your stay here. So what did you learn? Where does she live? She lives in Camden. Did you hear that? She lives in? Where does she work? She works in a bank. अगर in a bank बोले तो हम एक बैंक बोलना चाह रहे हैं कि बैंक बोलना चाह रहे हैं. फोकस हमारा बैंक पे है, लेकिन बैंक भी सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, तो खाली बैंक बोल नहीं सकते. शी वर्क्स इन अ बैंक मतलब वो बैंक में काम करती है. हिंदी में एक बैंक में काम करती है बोलने की जरूरत नहीं है, वो बैंक में काम करती है. शी वर्क्स इन अ बैंक. एंड इज शी मैरिड? यस, शी इज. व्हाट्स हर हस्बैंड्स नेम? Andre. Okay. All right. Andre नहीं. Andre. Andre बना रहा है. Jalant भाई, huh? You're feeling jealous that she's so pretty. Her husband's name is Andre. Okay. And she's wearing glasses on her head. She's stylish. But I don't like her clothes. Looks like 200 rupees t-shirt from the roadside. Okay. Guys, listen again. And this time, complete the question and answers. Ready? Everybody's got a pencil? Take your pencil out. Tape script 9.6. A Parisian in London. Hello, Chantal. Hi. Now, you're French, but you live in London, is that right? Yes, that's right.
And are you on your own here in London? No. I'm here with my husband, André. Ah, okay. Do you work in London? Yes, I do. I've got a good job. I work in a bank. And where do you live in London? Have you got a flat? Yes, we've got a nice flat in Camden. Oh, great. Has Andre got a job? Yes, he has. He's got a shop in Camden. He sells French cheese. Wow, that's good. And tell me, have you got a car here? No, I haven't got a car. I go everywhere on public transport. It's much easier. Okay, thank you very much. I hope you enjoy your stay here. What do you want? A sharpener, not sharpener. अभी उसको sharpener चाहिए, कैसे बोलेंगे? She wants a sharpener. She wants a sharpener. Do you want me to play it one more time? Tape script 9. Somebody shut the door, please. Thank you. Actually, the light has just gone out. You have to press the two-way switch off. Yeah, great. And the rest of the switches are on. The ones that you have turned off already. Yes, good. Playing. 6. A Parisian in London. Hello, Chantal. Hi. Now, you're French, but you live in London, is that right? Yes, that's right. And are you on your own here in London? No. I'm here with my husband, André. Ah, okay. Do you work in London? Yes, I do. I've got a good job. I work in a bank. And where do you live in London? Have you got a flat? Yes, we've got a nice flat in Camden. Oh, great. Has Andre got a job? Yes, he has. He's got a shop in Camden. He sells French cheese. Wow, that's good. And tell me, have you got a car here? No, I haven't got a car. I go everywhere on public transport. It's much easier. Okay, thank you very much. I hope you enjoy your stay here. Tape script 9.6. A Parisian in London. Hello, Chantal. Hi. Now, you're French, but you live in London, is that right? Yes, that's right. And are you on your own here in London? No. I'm here with my husband, André. Ah, okay. Do you work in London? Yes, I do. I've got a good job. I work in a bank. And where do you live in London? Have you got a flat? Yes, we've got a nice flat in Camden. Oh, great. Has Andre got a job? Yes, he has. He's got a shop in Camden. He sells French cheese. Wow, that's good. And tell me, have you got a car here? No, I haven't got a car. I go everywhere on public transport. It's much easier. Okay, thank you very much. I hope you enjoy your stay here. Let's see. Question number 1. I have told you already. You can't speak English just because you know English. Habit is a necessary part of it. Piche kariye na. How did it strike your mind? Why didn't you say, again, sir? Why couldn't you just say the word again? So everybody needs to change their habit. You need a new habit. You're doing nothing, zero to change your habit. You're trying a little bit to learn English. I can see you are here every day, you're practicing, you're listening, you are engaging.
But what are you doing to change your habit? Yes, your knowledge is increasing every day. You can agree with that, right? You will agree that your knowledge has improved. But what about your habit? So please do something to change your habit as well. Habit of speaking Hindi. You need to replace it with a new habit of speaking English. Okay. Let's see. Question, have you got a flat? Chantal replies, we've got a nice flat in Camden. Then the question, has Andre got a job? He's got a shop in Camden. He's got a shop in Camden. He sells French cheese. Then there is another question. Have you got a car? Have you got a car? Arhan, beta, pay attention. Have you got a car? No, I haven't got a car. I go everywhere on public transport. It's much than going by car. Okay. You want to practice the conversation with a partner? Before that, look at the grammar spot box. Have and have got both express possession. We use have got more in spoken English. I have a good job is the same as I've got a good job. Do you have a nice flat? Is the same as have you got a nice flat? She doesn't have a car has the same meaning as she hasn't got a car. But in the past tense, no, you don't have enough variety in the past tense. In the past tense, only one option. I had a boring thing. I had got नहीं उसमें नहीं past tense में नहीं ये सिर्फ present में. अगर past में बोलना हो कि मेरे पास एक साइकिल थी, I had a बहुत अच्छा मेरे पास एक खिलौना था. Okay, तुम्हारे पास मैं था. You had me. You had me. उसने ऐसे किया जब तुमने ये लाइन बोला you had me उसने कहा मतलब बड़ा ना था special चीज. You had me. All right. I had a boring job, so I left. Now, exercise 3. Change. Everybody, practice with me. We have a nice flat. Make sure कि आपका पार्टनर आपके बगल वाला पड़ोसी बोल रहा हो. अगर वो नहीं बोल रहा है पड़ोसी तो उसको पेंसिल चुभाओ. Okay. आज तुम मिस कर गई. कोई है नहीं पड़ोसी तुम. You want to sit next to her now? You want to do this? We have a nice flat. कोई उसको पेंसिल नहीं चुभा रहा, वो बोल भी नहीं रहा है. तुम्हारा पड़ोसी बैठा है, तुम बोल नहीं रहे, कुछ पेंसिल नहीं चुभा रहे. दीपक, दोनों पड़ोसी बैठा है. They are both dead. Sachin and Shlok are dead. Pencil is not enough. Okay. Come on. We have a nice flat. We have got a nice flat. Have we बोलना, got भी बोलना. We've got. लेकिन have को साथ बोला. We've got. We've. We have को एक साथ बोलेंगे तो we've. We've. We've means we have. We've got. I have a French husband. He has a business in Camden. He has got a business in Camden. जो अभी मिस करे अपॉर्चुनिटी, जो एकदम नहीं पुश करे अपने आप को, समझ नहीं पा रहे कि क्या लिखा है, क्या बोलना है, एकदम पीछे छूट रहे हैं. God bless them. Do you have a lot of friends? Have you got a lot of friends? How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters
have you got? I don't have any brothers. I haven't got any brothers. I have a sister called Natalie. I've got a sister called Natalie. Natalie has a big house. Natalie's got a big house. You have a good English accent. Listen to 9.7. Tape script 9.7. 1, We've got a nice flat. 2, I've got a French husband. 3, He's got a business in Camden. 4, Have you got a lot of friends? 5, How many brothers and sisters have you got? 6, I haven't got any brothers. I've got a sister called Natalie. 7, Natalie's got a big house. 8. You've got a good English accent. Tape script 9. Done? Okay. Now, I would like you guys to practice the conversation, the interview with Chantal. 9.6. The conversation is in your group now. Practice the conversation. Okay, if somebody's got two phones there, then they can lend their phones to young kids here who don't have a phone. If any two people have got two phones, both of them, both partners have got a phone, please lend your phone to your young friends here in the class in the front. One for them.
All done? Have you finished? Have you finished? Carry on. You can ask me questions about the parts which you don't understand. Was there anything that you don't understand? Are you on your own here in London? Are you on your own here in London? क्या आप अकेले रहते हैं यहाँ लंदन में? Are you on your own here in London? Are you here on your own in London? Now, everybody has the book? So, with a partner, you guys will have a game where you guys will quarrel with each other. You will quarrel with, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, okay? They'll argue with each other. And what will be the argument about? I've got a bigger house than you. I'm richer than you. You are nothing. All right? Fine. So, work with a partner, exercise 4. Imagine you are both millionaires. Imagine you are both. All right. Millionaires. Rich people have arrogance, ghamand. Yeah, definitely they do. A lot of them have a lot of arrogance, pride. Oh, we are very rich. You can't compare with me. तुम्हारे पास क्या, मेरी 4 पत्नियां तुम्हारे पास. All right. क्या कहा उसने? 6 गर्लफ्रेंड है. 4 वाइफ को बीट करने के लिए 6 गर्लफ्रेंड है. Okay. So decide who is A, who is B. Choose your partner, choose your character, and go to that particular page. If you are a student A, then you will go to page 150, 150. And if you are B, then you will go to 153. Choose who, whether you are A or B. Choose and start your argument. Hey, look at this. I've got a bigger house than you. I don't think so. I've got 10 bedrooms. That's nothing. I got 8 bedrooms on the first floor and 6 bedrooms on the second floor. And if you have words that you don't understand, talk to me. Go through your list. Go through your list.
You fighting? I don't hear you fight. I don't hear you argue. Argue with each other. Okay. All right. Who is richer? Who's got a bigger house? Your house is bigger. All right. Is there a word that you don't understand? Do you have some vocabulary items that you don't understand? Bowling alley. Okay. A bowling alley is an area where there are bottles kept and you roll a ball and the ball goes and knocks them down. It's a game. Okay. We call the game bowling and the area is called bowling alley. The strip on which you roll the ball, that, hello, stop it. Okay. The strip on which you roll the ball, the strip on which you roll the ball, that strip is called bowling alley. So some people have it in their house, they're so rich. Okay. Yeah. Accommodation is another word for houses. But remember, house can be countable. One house, two houses, three houses. Accommodation is an abstract noun. It cannot have a plural. So when you apply for a job, they can say, we will give you 30,000 rupees per month and we will give you free accommodation. It means we will give you a place to live. You don't need to pay. Free accommodation. Okay. So accommodation is a place to live. But accommodation is an uncountable noun. So you never say accommodations. Nasir, pay attention to me, the brace. Did you understand accommodation? So your papa works in a bank. Okay. So your papa gets a salary plus accommodation. He gets accommodation. Now, accommodation means the bank pays him for the place where he will live. Suppose he doesn't want to live in that place where the bank says, then he will get some extra money. Okay, when you go to another city, a new city, what is your biggest challenge? Accommodation. Where will you stay? When you go to a new city, what's your biggest challenge? Accommodation. Where will you live? That's your biggest accommodation. Yeah, nivas, avas. There is the word avas. Okay, there is a word in Hindi called avas. Okay, so accommodation means place to live. But remember, accommodation is an abstract noun and it doesn't have a plural. Accommodation comes from the verb accommodate. It comes from the verb accommodate. This room can accommodate 50 students. This room can accommodate 50 students. It means 50 students can sit in this room. This room can accommodate. All right. Fine. Move on. Any other word that you don't understand? A ballroom. A ballroom is a big hall rich people have where they organize parties. All right.
And yeah, it's a big room, big hall. It's called ballroom. And there is a special dance where the couples hold each other close and move slowly. This is called a ballroom dance. Rich people's style of dance. Couples hold each other and move slowly. It's called a ballroom dance. Any other words that you want to know? Stable. Look at the spelling. S-T-A. What is a stable? A place where you keep your horses. All right? A place to keep horses. Stable. Okay. In Hindi, we call them stable. Now, stable. Any other words that you don't understand? Fine. Let's move on to the superlatives now. I've got his clip. I've got means. I have. Have you got means? Have you got means? Do you have? They haven't got means? They don't have. Okay. Now let's move on to London's biggest market. London's, not India's biggest market. London's biggest. Notice this. Hindi. London's biggest market means लंदन का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट, इंग्लिश राइट, बिहार का सबसे अमीर आदमी, बिहार, okay, so biggest is a superlative, biggest is a, all right, let's read the introduction of Camden Market. The biggest and most popular market in London. Wait for a second, very quickly I would like to, Nanda College, Bihar Sharif का सबसे बड़ा कॉलेज है ना, Nanda College is the biggest college, okay, in Bihar Sharif, right? All right, fine. इस क्लास का सबसे लंबा लड़का, the tallest student or boy, जो भी बोलना चाहे आपकी मर्जी, the tallest student in this class. Who is it? Tabriz is the tallest student in this class. All right. And the youngest student in this class? Inaya is the youngest student in this class. She's only 7 years old. Okay. She's the youngest student in this class. लेकिन अगर इस क्लास के बाहर गए तो is she the youngest student? She is the youngest student in this group. सुपरलेटिव की जब भी बात होती है तो एक दायरा होता है पहले, उस दायरे में सुपरलेटिव. इस क्लास का सबसे लंबा स्टूडेंट तब्रेज. इस क्लास का दायरा हटाओ, अब तब्रेज सबसे लंबा नहीं होगा, क्लास के बाहर चले जाए और लंबे लोग मिल जाएंगे. But in this class, Tabriz is the tallest, the oldest student in the class. The oldest student in the class. I'm not a student in this class. Now, so I'm out. The oldest student in this class. Who is the oldest student in this class? Okay, you don't know. It's all right. Okay, the naughtiest student in this. Inaya is the naughtiest? Who? Sajid. Sajid. Okay. The most intelligent student in this. The most intelligent student in this class. Sajid is the most intelligent. Okay. People have opinions. Again, ये सब क्या है? All right. मैं बोलूँ तो शायद fact बन सकता है, क्योंकि I'm a teacher. I'm the teacher here. Maybe I understand better, right? Okay. But you guys can express your opinion. इस मैटर पे आपकी opinion होगी, मेरी बात जो होगी वो fact हो जाएगी. ठीक है?
because I know you. Intelligent अगर मैं कहूँ तो only in terms of English I can decide. I cannot decide who's the most intelligent person here. That will be again my opinion. If I say XYZ is the most intelligent person here in the class, that will be an opinion. लेकिन IQ टेस्ट लिया जाए तो उसके बाद decide होगा who is the most intelligent person in the class. Highest person who gets the highest score. Okay, the person with the highest score will be the most intelligent. Okay. Hmm. Yes, Lara, बोलो. आदत डेवलप करना है. मैंने कहा नॉलेज तो बढ़ रही है, आदत डेवलप करनी है इंग्लिश बोलने पर. वो तभी होगी तो आप अपना डर छोड़ दो. जब मुझसे इंग्लिश में बोली तो करो. एक लाइन, आधी लाइन, दो वर्ड पीछे करिए, नहीं बोलना है. अगेन सर, सर अगेन सर अगेन सर स्टॉप सर. इतना तो कर सकते. हाँ जी. So change your habit. Hmm. Any more questions? Any more? The best sweet shop in that place is Nanda Misami. That's my view. You know, because I don't trust other sweet shops. They do a lot of adulteration. They do a lot of Milawat something. Milawat something. They do a lot of adulteration. Their milk cake has no milk. Okay. The most good-looking person in the class. The most good-looking person in the class. नहीं, बूढ़े इंसान का मजाक नहीं उड़ाया जाता है. गंदी बात. ठीक है, मजाक नहीं बनाना. We have some students. There is a good competition, right? The most good-looking people in the class. We have Masud, we have Rudra, we have Umar, we have some more people here. Deepak, we have some, yeah, Inzamam. They're all good-looking guys. लोग मॉडलिंग करने जाएंगे थोड़ी दिन बाद, इंग्लिश सीखने के बाद. या और कर, मैंने खाली लड़कों के नाम लिए थे. ओके फाइन. तो आप समझ गए सुपरलेटिव का यूज किस जगह करना है. ओके चलो तो बोलो. द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश. Yeah, good. ओके, तो ये कहाँ, कौन से ग्रुप में, ये दायरा नहीं बनाया था तुमने. दायरा बनाओ. इन इंडिया. All right, fine, good. What did he say? Huh? In the Vinay Master? Vinay Master. Yeah, Matsa. Matsa through इज्जत से Masterwa. Yeah. Do you call me Vinay Masterwa? Vinaywa बोलल को? Do you say this? Vinaywa बोलल को? छुट्टे मुड़े झाड़ दिल को हमरा. ऐसे बोले हो बाद में. अब श्योर कोई तो बोला होगा. हाँ, बोलते बोलते कोई. हम जानते हैं लोग ऐसी बात करते हैं. हम अपने totally. माशुक बोलता है ऐसे. Vinaywa बोलल को. All right. You know, one student said this, and everybody else, hey, ऐसे कैसे तुम बोलेगा रे? That was many years ago. There was this guy, he joined a senior class. Okay. I was teaching vocabulary in that class, and the students were all old students of mine, and they were just good at English. So I just came into the class and talked in English and explained the vocabulary in English. A boy joined, he was a new student. His English was not so good. So he stayed in the class for about a week or two, and then one day he got fed up and he went out and खाली बैठ के इंग्लिश में बकता बकता करते रहा. खावे खावे तो आवा नहीं एकरा, कुछ समझ नहीं आ रहा. And then his friends said, ऐसे कैसे बोल दिया तुम, तुम्हारी इंग्लिश खराब है. We all understand what he's speaking. That's why we are coming to the class. So yes, level मैच कराना बहुत जरूरी है. तो कभी कभी मैं अपने वीक स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि तुम पेशेंस रखो और जो कहता हूँ करो. प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बात नहीं मानते कभी कभी. That's the problem.
All right. Superlative is clear. Superlative. Do you want to marry the most beautiful girl in the world? Why not? That would be an amazing achievement. The most beautiful girl in the world. Okay. And girls, do you want to marry the richest man in the world? Do you want to marry the richest man in the world? No, he will not have time for you. Okay. But say, who needs his time? We need his money. Okay. Superlative. एक दायरा है और उसमें सबसे ऊपर किसी मामले में लंबाई के मामले में ऊंचाई टॉलेस्ट हाईएस्ट ओके साइज के मामले में बिगेस्ट महंगा के मामले में द मोस्ट एक्सपेंसिव में ईएसटी नहीं लगा सकते ऑलरेडी लॉन्ग है मोस्ट एक्सपेंसिव ओके so if the idea is clear then let's read the text about Camden Market and complete the text with the superlative adjective. Read the text carefully, slowly. The biggest and most popular market in London takes place every day in Camden, but it is busiest and best at the weekend. The biggest and most popular market in London. यानी लंदन में सबसे ज्यादा पॉपुलर दुनिया का पॉपुलर नहीं है लंदन में सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे बड़ा भी है लंदन The biggest and most popular market in London takes place every day. हर दिन लगता है ये मार्केट It takes place every day means हर दिन लगता है Okay, our class takes place every day except but it is busiest and best at the weekend. लेकिन सबसे ज्यादा मस्त कब होता है वीकेंड पे सैटरडे संडे It is busiest and best at the weekend. लगता तो रोज है लेकिन सबसे ज्यादा बिजी कब होता है और सबसे अच्छा भी होता है वीकेंड कंसिडर Read the text. Camden is famous all over the world for its fashion, artists, clubs, and music. But it is most famous for its market. Camden खाली एक चीज के लिए famous नहीं है. Camden is famous for a lot of things. It is famous for its fashion. It's famous for its artists. It's famous for clubs, its music. लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर किस वजह से है? It's most famous for its market. कैमडन में एक मार्केट लगता है. मार्केट लगना समझते हैं ना? स्ट्रीट मार्केट लगता है. It is the largest street market in the UK. पूरे यूके में इससे बड़ा स्ट्रीट मार्केट नहीं भाई. स्ट्रीट मार्केट में जो गली में लग जाए दुकानें स्ट्रीट मार्केट दुकान नहीं है बस ऐसे ही लगा ठीक है ठेला वगैरह हाँ इट्स द लार्जेस्ट स्ट्रीट मार्केट इन द यूके more than 400,000 people come every weekend 4 lakh people 4 lakh people come every weekend to look to shop to eat and to meet friends. People come for different reasons. Some people come just to look. Some people come to shop. Some people come to eat there. And some people come to just meet friends. Let's वही मिलते हैं यार वही सब मस्ती करेंगे. Like we sometimes meet at Smart Bazaar. चलो वही मिलते हैं. In AC in summer season. There is music everywhere. So when you are walking in the Camden Market, you can hear music. You can hear music everywhere. And the street food is delicious. The street food is delicious. Very tasty. The street food is delicious. Very tasty. And it is the
चीपेस्ट इन नॉर्थ लंदन, नॉर्थ लंदन में उससे सस्ता खाना, it is the cheapest in North London. You can't find food that is cheaper than it anywhere in North London. South London में जाकर मिल जाएगा, दायरा बनाना बहुत जरूरी है सुपरलेटिव के लिए. It is the cheapest food in every part of the market. You find something interesting. In every part of the market, you find something interesting. It has the most amazing clothes. The most amazing clothes. ऐसा कपड़ा देख के मुंह, the most amazing clothes. It has the most amazing clothes, beautiful jewelry, jewelry मत पढ़ना, jewelry. ज्वेल नहीं जाना है, ठीक है, स्पेलिंग के साथ ज्वेलरी नहीं करना है, jewelry. Okay. The most amazing clothes, beautiful jewelry, music, and tattoo shop. Tattoo shops. But if you want tattoos, you should go to Camden Market. The Electric Ballroom is the oldest nightclub in Camden. Camden का सबसे पुराना है. Camden के बाहर और पुराने मिल जाएंगे, लेकिन Camden का सबसे पुराना कौन सा है? The Electric Ballroom. The Electric Ballroom is the oldest nightclub in Camden. You can hear the latest rock bands before they become famous. इस लाइन का मतलब समझे? You can hear the latest rock bands before they become famous. Bands famous होते हैं, फेमस होने से पहले भी गा रहे होते हैं. फेमस कब होते हैं? जब उनको कहीं ऐसा जगह मिल जाए जहाँ अच्छे पहले होने चाहिए, कंडीशन तो है ही अच्छे, लेकिन कभी ढेर सारे लोग सुन ले, उसके बाद तो फिर पॉपुलर हो जाना है. Because there are 4 lakh people there. So you can hear the latest rock bands before they become. And there are hundreds of clubs. But Proud is one of the coolest. Inzamam is not paying attention. We're not paying attention. We're not engaged in this activity. Proud is one of the coolest what? Proud is one of the coolest what? Proud is one of the coolest clubs. It is one of the coolest clubs. There are hundreds of clubs there, but one of the coolest clubs is Proud. Candle Market rocks. Candle Market rocks. It's amazing. अगर आपको इस क्लास से बहुत मजा आता है, बहुत खुश है, आप जिस पे मिलते बोलते हैं वहीं जाओ इंग्लिश सीखने. आप क्या बोलेंगे? एसटीसी क्लास रॉक्स. और आपको लगता है भक्त बुखार एडमिशन बोल दिया, पैसा बर्बाद हो गया, कभी नहीं बोलेंगे किसी के यहाँ जाने के लिए. तो आप क्या बोलेंगे? द क्लास सक्स. लेकिन ये रूड लैंग्वेज है, ठीक है? अपने के बारे में कभी मत बोलना, चीजों के बारे में बोलते रह सकते हो. मैथ्स में आपका एकदम मन नहीं लगता, क्या बोलेंगे? मैथ्स सक्स. आपको मैथ्स में बहुत मजा आता है, तो मैथ्स रॉक्स. नाउ व्हाट्स योर ओपिनियन? Math rocks. Okay. All right. Do you also agree? Math rocks. It's amazing how, siblings are different. She likes math, she doesn't. I likes math. Okay. I think you take after your papa. मैंने क्या बोला? I think you. आप अपने पापा की तरह हैं. Your papa likes math, I think. That's why he doesn't like math. Then how come he's the banker? He is really. And who is good at math then? Mummy? Is Mummy good at math? No. Very interesting. Mummy is not very good at math. Papa is not good at math, but you are. And you are not. You don't like it so much. Okay. But those who enjoy maths, I can tell you, they have a lot of fun at school. And those who don't like math, कम से कम इंडिया में उनकी लाइफ बड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि सब लोग उनको बोलते हैं यू आर वीक. खाली मैथ्स नहीं आया तो तुम्हें बहुत खराब बोलते हैं. दैट्स अ प्रॉब्लम. अरे देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस. मैथ्स में न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस चाहिए, नहीं है किसी के पास, ऑल राइट, बट दे कैन बी इंटेलिजेंट इन अदर एस्पेक्ट्स.
माई नेफ्यू इज नॉट गुड एट मैथ्स, लेकिन लॉजिक में अच्छे होने चाहिए दोस्त, भले मैथ्स में अच्छे हो चाहे ना, लॉजिक में अच्छे होने चाहिए। फाइन, इट्स 5 o'clock। सुपरलेटिव समझ में आया? ठीक है, रास्ते में कोई लड़की दिखेगी, क्या बोलोगे सुपरलेटिव में? शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव सीन टुडे। आज के लिए सबसे अच्छा, ठीक है। कल कल कोई और होंगी, लेकिन शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई हैव सीन टुडे। अब देखो मैंने दायरा बनाया, अब उसको बोलोगे तो पिट जाओगे, दोस्तों को बोलना। दायरा कैसे बनाया? आई हैव सीन टुडे, मतलब आज जितना देखा उसमें वो सबसे सुंदर है, राइट? होमवर्क, open your practice book everyone। What page number is that? 56 56, page number 56 is your homework for tomorrow। I'll see ya, bye everyone।